सर एक्चुअली ये इमेज बहुत ज्यादा ब्लर है। Yeah, correct. No, don't worry. Image is blur, right? But here it's written that these are layers. Here is written gas. Here it's written oil. Here it's written water. Okay. And here at the bottom it's written that petroleum and natural gas deposits. Okay. So these are rocks of different types. Don't worry, this is physical. I am just telling. And these are your wells, जो कि खोदते हैं लोग. क्योंकि ये well यहाँ से इसको निकालते हैं. Correct. Like that, it's taken out from bottom. सर पानी सबसे नीचे होता है। Correct. क्योंकि नीचे पानी है. सर और ये क्या है, मतलब वो मैं एक सेकंड एनोटेट करता हूँ। ये क्या है? These are rocks of different types. ओके अलग अलग प्रकार के rocks है वो. ओके सर। तो कहाँ है? The petroleum is obtained by drilling through the earth, you know, and through impervious rocks. Correct. क्या है इसके? These are what? Impervious rocks. Impervious मतलब है ना, नॉन पोरस रॉक्स, जिसमें की पोरोसिटी नहीं है, राइट? पोरोसिटी तो ऐसे ऊपर जा सकते नीचे. करेक्ट. तो सबसे पहला पेट्रोलियम के लिए डिग किया गया था 1859 में, राइट, इन यूएसए. जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया, राइट. यूएसए में क्या नाम था? पेंसिल्वेनिया इन यूएसए. ओके. इंडिया में कब मिला था ऑयल सबसे पहले? या इन इंडिया सर रैंडम केस है, गुजरात में मिला होगा. नो. 1867. तमिलनाडु. 1867 first it was brought in Assam. ओके. इस जगह असम में एक जगह थी, उसका नाम था मदूम, है ना. मदूम में मिला था. सर पेट्रोलियम मिला था ना? हाँ राइट. पेट्रोलियम की बात चल रहा है, राइट. और जब ये यहाँ से ऑयल को निकाल देते हैं, है ना, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक लिक्विड. जो निकला हुआ ऑयल रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लैक लिक्विड. और आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ये, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जा रहा है, राइट. पेट्रोलियम इतना काला हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. करेक्ट. काला क्या है ये? सोना है कि नहीं? क्या कहा जा रहा है इसको? ब्लैक गोल्ड. Why gold? Because it's so costly. Yes or no? बहुत सर वो यूएसए के नीचे क्या लिखा है? पेन वो कुछ तो है ना? पेंसिल्वेनिया. क्या? पेंसिल्वेनिया. ओके. क्या कहा जा रहा है उसको? पेंसिल्वेनिया कहा जा रहा है. ओके. अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों? हाँ सर. ठीक है. तो इस तरह से पेट्रोलियम इतना इम्पोर्टेंट है. और देन सर सर मैं अभी लीव हो गया था, क्या बताया आपने अभी? अभी तुम लीव हो गए थे. कौन हो तुम? सर 4 मैं बता रहा था, एंड हो गई. मैं पागल आदमी हूँ और तुम सब लोग बहुत होशियार हो.
यही मैंने बताया। अरे कुछ शांत हो गए तुम तो एकदम। नहीं सर, नहीं। हाँ नहीं सर, शांत। अच्छा अच्छा, ठीक है। करेक्ट, यस सर, दिस इज करेक्ट राइट। हम्म। सर ये यस। क्या है वो? ओशियन के नीचे का है क्या? कौन सा वाला? हाँ ये जो फिगर है, मतलब आपने बताया था ना कि जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से वहां पे पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग हो गया है। तो उसके नीचे का वो लेयर है क्या? राइट राइट राइट, करेक्ट। लेयर है मतलब, इट्स डाउन बिलो द ओशन बेड्स। ओशन बेड के अंदर ही है वो कहीं तो। हाँ सर। है ना। ओके। हाँ सर। सर हम्म, ये बुक, सर ये फोटो हमारे बुक में है। किसमें है? आपके बुक में है, राइट राइट करेक्ट। यस, ठीक है, अभी आगे बढ़ा जाए, है ना। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। सर हो गया, बढ़े आगे। बढ़ेंगे सर। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, yeah, so what I was telling is that refining of petroleum. So petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It's a mixture of various consumes such as petroleum gas. तो क्या क्या रहता है देखो इसमें? पेट्रोलियम गैस है सर जो, एक्चुअली उसका अनप्लीजेंट ऑर्डर नहीं रहता। अगर हम पेट्रोल सूंघे तो इस उसकी तो एकदम मनमोहक खुशबू रहती है। पेट्रोल के बारे में नहीं हाँ बात कर रहे, सर। पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सर ये भी होता है ना उसमें फ्यूल ऑयल? हाँ, अदर्स आर आल्सो देयर, बट ये पेट्रोलियम के बारे में समझ में आ रहा है तुमको? पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालने वाले आ गया अभी हम। यस सर। रीडिंग माय पॉइंट। लेकिन वो पास बहुत अच्छा था, मतलब मुझे एलपीजी का पास भी बहुत पसंद है। सर डीजल की अच्छी नहीं आती, हाँ, पेट्रोलियम कैसे? डीजल की बहुत फालतू रहती है। हम्म, लेकिन पेट्रोल उल्टी और आती। मुझे एलपीजी की भी पसंद है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, गुड। यस, तो इसमें ये सब चीजें होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, करेक्ट, है ना। या फिर मेनी मोर लाइक केरोसिन भी है यहाँ पर, है ना। एंड योर इवन योर गैसोलीन इज आल्सो देयर, करेक्ट। फ्यूल ऑयल, Yeah, fuel oil is also there. हेवी ऑयल। Hmm. Heavy and light oil is also there. Correct. And many सर more वो things. केरोसिन के बाद आपने क्या लिखा है? Gasoline. हाँ वो ग्रोसोलीन लग रहा है। ठीक है, लिख लो इसको। ओके सर।
हो गया लिख के? नहीं सर। लिखो लिखो। हो गया सर। ओके लिखो लिखो। सर हम्म, इसमें बिट्यूमेन भी रहता है ना? क्या रहता है? बिट्यूमेन। बिट्यूमन। Yes, sir. Actually, yeah, right. Bitumen is also present. Also called as asphalt, right? सर वो इसमें Yes, यूज sir. करते हैं, कुछ कुछ रोड्स के लिए यूज करते हैं वो हाँ बिटुमेन। सर। हाँ, correct, correct, correct. Yes, right. Okay. Second paragraph says that the process of separating various constituent fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. कहाँ पर किया जा रहा है इसको? We are making it where? In a petroleum refinery. Correct. तो जनरली इसका रिफाइनिंग हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, करेक्ट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है. ओके, so what happens? Anyone knows fractional distillation? What it is? What is fractional distillation? Have you heard about it? हाँ सर, हमें केमिस्ट्री में सिखाया था ऑफलाइन क्लासेस में। Can anyone explain what is fractional distillation? सर उसके लिए ये लगता है, सर इंस्ट्रूमेंट लगता है। एक्चुअली
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगेगा. हाँ सर, वो एक इंस्ट्रूमेंट लगता है. करेक्ट करेक्ट. Sir, it depends on the boiling point of various liquids, right? करेक्ट करेक्ट राइट. यस, डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस लिक्विड्स. राइट. सर ये हमें था स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर. हाँ sir. Correct. So we know that, you know, what is fractional distillation. How, based on the difference in temperatures, the things are separated. Okay. How, based on difference in temperatures, the things are separated. ठीक है. Getting a point, right? हाँ सर. So accordingly, then your petroleum gas, gasoline, kerosene, अलग अलग उनका boiling points है. तो petroleum gas boiling point is 40 degree, gasoline and naphtha boiling point is 40 to 160 degrees, kerosene boiling point is 150 to 250 degrees centigrade, light oil सर is किसका तो भी 673 केल्विन है. right, correct. वो yeah, residues are present there, उनका होगा. Okay, so like that different things get separated out differently, है ना. तो ये refining करते क्यों हैं हम लोग? To separate the various constituents of petroleum. और सर उससे Crude अच्छे हम ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं वो इससे, मतलब लुब्रिकेटिंग और डीजल्स वगैरह. lubricating do से बाकी ऑब्जेक्ट होना, राइट. तो क्या होता है जनरली, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द थिंग्स, करेक्ट. तो बेस्ट चीज मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ा, उसको सेपरेट करना पड़ता है. ओके, राइट. टू get the best thing, what we are doing, we are separating the things, correct now. That's why petroleum is refined. Originally it is not pure. Okay, originally it is not pure, right? pure. But ahead, with time, it start becoming pure. Okay, so we'll now just try to see something based on this refining process. सर मतलब आज क्विज नहीं होगी? Just a minute, I'll show you. Sir, sir, can you tell what you मतलब आपने क्या डिस्कस किया? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. We are discussing how refining happens. That's all. कब disconnect हुए? सर अभी 5 मिनट पहले वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ था. Okay, we are discussing that only, about refining and why refining is done, because it is not in the pure form. To bring it in pure form, we are doing the refining. Okay, so now let's try to understand by this video. Begins with a process called distilling. After oil is superheated, it becomes vapor. The vapor is fed into the distillation unit. As it rises and cools, the vapor turns back into a liquid. Using stacks of trays, the liquid is easily collected and separated by weight. The lighter and medium weight liquids require less processing before they're ready to be used in cars and trucks. The heavier liquids need more processing to become useful. A process called cracking is used to maximize the usefulness of heavy oil. Heavy oil has long strings of carbon and hydrogen molecules. Using a catalyst, these molecules can be broken into smaller chains, transforming the heavy oil into lighter, more valuable fluids.
Reforming is a process that increases the amount of gasoline produced from crude oil. One of the products separated in the distilling process is a liquid called naphtha. The number of carbon atoms in naphtha is about the same as the number found in gasoline, but their structure is more complex. Reforming rearranges the naphtha molecule, turning it into a usable, gasoline-like molecule. Blending is a process of mixing different refinery products to make finished petroleum fuels. Gasoline, for example, is blended to achieve octane standards, creating the grades of gasoline you see at the pump: regular, mid-grade, and premium, that are necessary to meet the needs of specific engine types. Treating is a process used to produce cleaner gasoline, which helps protect both the environment and our health. Gasoline molecules contain impurities like sulfur that can be removed. When the molecules are heated and come in contact with a special catalyst, a chemical reaction occurs that strips the sulfur away. These sulfur compounds are used as fertilizers and in pharmaceuticals. Nothing goes to waste in a refinery. ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद आपुलकीचा. Sir, In this video, you will learn how Okay, I was unmute, I guess. Understood the previous video? हाँ सर. Yes, सर sir. आज है आज क्विज. क्विज विज नहीं आज, हमारा भी एग्जाम आ रहा है. ओके, तो सर कौन फर्स्ट सा? एनएसओ का, ओके. उसके लिए चैप्टर है ना. हाँ. We'll do this chapter, then like that. We'll now try to see what is fractional distillation. fractional distillation separates crude oil into useful fractions. Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land. ग्राउंड से जो ऑयल निकाला गया बच्चों, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? That kind of oil is called as what? Crude oil. That is called as a crude oil. Correct. वो crude oil बोला जा रहा है. Or under the sea. It is an exceptionally valuable resource. It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be a viscous, dark-coloured tar-like consistency, and the different fractions of hydrocarbons must be separated by fractional distillation for them to be useful. Okay. पहला पहला कैसे दिख रहा है? ये काला काला दिख रहा है, राइट. इसीलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा, है ना, ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकें. नहीं तो कुछ काम का नहीं फिर वो, है कि नहीं? Before we understand how fractional distillation works, we should be clear that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different chain lengths. Yeah. So what is crude oil? Mixture of hydrocarbon. Hydrocarbon And with different what? chain length. Yes, yes. And what is a hydrocarbon? Molecule of
carbon dioxide and hydrogen. कार्बन डाइऑक्साइड नॉट नेसेसरली, विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे दिख रहा है ना आपको राइट में। हाँ सर। कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट चेन लेंथ्स, some being short molecules and some being very long. Intermolecular forces act between molecules, and the longer the molecule, the greater the intermolecular force. As you can see here, the small molecules have weaker intermolecular forces, and so will require less energy to break them apart and turn them into a gas. They have a lower boiling point. The longer molecules have greater intermolecular forces. More energy is required. A higher temperature will be needed to evaporate these molecules. They have a higher. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, इससे क्या पता चल रहा है हमको? सर जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। किसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है? सर जो छोटे हैं ना, मतलब जो स्मॉल है, स्मॉल मॉलिक्यूल। सर स्मॉल चेन का कम होता है और जो बड़ा वाला चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है और वो मॉलिक्यूल्स भी उसके बीच में, मतलब वो स्पेस ज्यादा रहती है। करेक्ट। तो जो छोटे हैं, है ना, उनका फोर्स कम रहता है, उनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। लेकिन जो मोटे हैं, है ना, जो ज्यादा बड़े हैं, करेक्ट, उनको तोड़ने में क्या लगेगा? उनको तोड़ने में एनर्जी बहुत ही क्या लगने वाला है? उनको तोड़ने में एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। Boiling point. Now we understand how chain length is related to the boiling point of a molecule. Let us look at how this method works. As you can see, crude oil is heated up to a high temperature outside of the fractionating column. The hot crude oil, now mostly in vapour form, is pumped into the column. The column has a heat gradient and is very hot at the bottom, going cooler as we move up to the top. Even at the very bottom of the column, where the temperature is still high, some long chain molecules with high boiling points begin to condense back into a liquid. These are collected at the bottom of the column. The rest of the molecules start to rise up the column, making their way through bubble caps in each tray. The bubble caps slow down the rate of the rising vapour, and eventually the vapours get too cool, condense, and are collected as liquids in the trays. Small molecules have low boiling points, and so condense much higher in the column, where the temperature is cooler still. As you can see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same tray, and this is why they are known as fractions. They are mixtures of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has some important uses. Some examples of fractions are petrol, useful as a fuel for cars; naphtha, used in the manufacture of chemicals; kerosene as aircraft fuel; diesel oil, used as fuels for vans, cars and lorries; and bitumen, a mixture of large chain hydrocarbons used to lay roads. Now, at the end of this video, you should understand that crude oil is a mixture of important hydrocarbons, and that fractional distillation is the method used to separate crude oil into useful fractions with similar boiling point. You should understand that small chain molecules are collected at the top of the column since they have lower boiling points, and larger chain molecules are collected further down the column as these have higher boiling points. बच्चों समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। सिंपल है, nothing much in that, correct? But what he was trying to mention is that the impure crude oil has to be purified by fractionating column. Fractionating column, we saw how it works. जैसे जैसे वो गैस को नीचे से छोड़ते हैं और ऊपर जैसे जैसे जाता है, वो कॉलम जो होते हैं, है ना, पार्टीशन,
वो उसको गैस को स्लो कर देता है और एंड इवेंचुअली इट देन स्टार्ट्स टू कंडेंस, वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होते होते फिर वो ये भी हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म। अंडरस्टैंड पॉइंट? ओके सर। ठीक है। ओके सर। क्या हम लोग क्या देख रहे थे? we were seeing how refining is very very important, correct ना? So we are here na, about the refining. Okay, now these are the various, some of the various consumer petroleum and their uses. Okay, LPG, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax, bitumen, correct? So इन सब से ये मिलता है। तो LPG कहाँ पर? फॉर होम एंड इंडस्ट्री, पेट्रोल इज यूज्ड फॉर मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, kerosene used for fuel for stoves, lamps, and for jet aircraft. Diesel is used for heavy motor vehicles, electric generators, lubricating oil for lubrication, paraffin wax for ointment, candles, Vaseline, etc. And then bitumen for paints, road surfacing, etc. like that. Got it? सर परफ्यूम किसके लिए यूज? परफ्यूम किसके लिए यूज होता है? बॉडी पे लगाने के लिए। सर मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम में कौन सा कैटेगरी में? कौन से कैटेगरी? हमने तो उसको पहले ही देखा था ना, परफ्यूम्स को। परफ्यूम का है कहीं तो देखा ना हमने आज, करेक्ट? एक्चुअली सर देयर आर, सुना है। एक्चुअली देयर आर मेनी, है ना, लेकिन क्या है उसमें से हम लोग कुछ ही चुनिंदा देख रहे हैं जो कि स्पेशल है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बोला कि एक्चुअली देयर आर मेनी कंस्टिट्यूएंट्स। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आप रिपीट कर सकते हो, बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। या करेक्ट। तो एक्चुअली आई वाज टेलिंग दैट कि देयर आर मेनी सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर पेट्रोलियम, बट उसमें से एक इसमें ये भी आ जाता है, आपका परफ्यूम भी आ जाता है ना। सो नॉट नेसेसरली एवरीथिंग इज मेंशन्ड, है ना, like that it may come under your heavy oil, like that. Okay, heavy oil, अभी सब कुछ चीजें नहीं लिखी गई, ऐसे बहुत सारे हैं। So don't worry, it gets formed somewhere or the other. Heavy oil, light oil. ठीक है, बोलो। सर जो एस्फाल्ट होता है वो सबसे मतलब हल्का वाला, मतलब हम बोलते हैं ना सबसे, उसका वेट बहुत कम होता है ना एस्फाल्ट का। हाँ तो और नहीं, मतलब आई गेस उसका वेट सबसे ज्यादा होता है बिट्यूमेन का। हाँ एस्फाल्ट का कम होगा क्योंकि वो एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है ना, इसके लिए। नहीं, उसका ज्यादा है वेट। we'll have to check that वेट ज्यादा है या कम है एस्फाल्ट। सर ये एरोप्लेन्स में तो सर अभी केरोसिन। वीडियो देखा ना, उसमें बिट्यूमेन सबसे नीचे था, तो फिर वो ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा हेवी होगा ना। that is there, that was based on boiling point, correct ना? was based on boiling हाँ point. सर, बॉइलिंग पॉइंट, और फिर वो सबसे नीचे सेटल होता है ना, इसलिए वो ज्यादा वेट, मतलब ज्यादा वेटेड होगा। yes. सर ये Okay, मीटिंग sir. एंड होने के बाद वापस रिजॉइन होना है क्या? नहीं हो गया ना फिर अब। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो विल चेक एस्फाल्ट वेट। आई एम आल्सो नॉट श्योर ज्यादा या कम है, विल सी। ठीक है, ओके, एनी डाउट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग मोर? और कुछ पूछना है नो किसी को? डाउट सर। नहीं सर। नो डाउट,
ठीक है. So what we are remaining now is with your natural gas. So next lecture we'll try to complete your natural gas, right? Meanwhile, सर पेट्रोलियम हाँ, सर पेट्रोलियम की ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है क्या कोल की, क्या नेचुरल गैस की? in petroleum also we saw ना last time. सर हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है ना? ना, हाइड्रोजन की तो ज्यादा होती है, बट इन तीनों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मतलब फॉसिल फ्यूल्स के अंदर. फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, राइट. सर एमोनिकल लिक्विड की कितनी होती है? एमोनिकल लिकर, हाँ सर. इट्स नॉट मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल काइंड ऑफ, उसका थोड़ा कम ही रहता है. कोल गैस का अच्छा रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहता है. पेट्रोल का भी हाई रहता है, करेक्ट ना? यू आर नॉट नेचुरल गैस का डिस्कसिंग नंबर्स. नेचुरल गैस आल्सो इज हाई, इट्स आल्सो बर्न. सर सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा था? हाइड्रोजन. सर आई गेस नहीं नेचुरल नहीं, गैस होगा. हाँ, whichever burns easily, है ना? हाँ, जो भी अच्छे से बर्न करता है वो ज्यादा एफिशिएंट है, करेक्ट. ये नहीं सब मतलब सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है इन फॉसिल फ्यूल्स में? वही मैं बोल रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा बर्न होता है वो जल्दी बर्न होता है, वो आसानी से कौन बर्न सर होता है? मतलब आसानी से कौन बर्न होता है? सर पेट्रोलियम लग रहा है. कोल नहीं होता. सर वो तो इग्निशन टेम्परेचर होता है. सर कोल को थोड़ा ज्यादा हेलो बंद करना सर. पड़ता क्या क्या क्या? कोल को थोड़ा हेलो सर. है, ज्यादा बंद करना पड़ता है. यहाँ देखो, या ठीक है. तो नेचुरल गैस हैज वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, राइट. सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का होता है, उसके बाद आपका आता है पेट्रोलियम, एंड देन कम्स योर कोल. ठीक है. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. सर मीटिंग एंड हो गई है क्या? रुचा को एक्चुअली वो आप उसे एडमिट नहीं कर रहे हो तो उसे लगा मीटिंग एंड हुई है, तो उसे एडमिट कीजिए ना. वो शी इज नॉट देयर इन द वेटिंग रूम. थैंक यू सर, आपने कर दिया मुझे बाद में. ओके ओके, ठीक है. सो वी आर नाउ एंडिंग, विल एंड नाउ. ठीक है. सो विल मीट नाउ ओके नेक्स्ट ऑन सर. सैटरडे, राइट. सो ओके अंडरस्टूड सर. ना? सर तभी आप क्विज के लिए प्रिपेयर करके आना. या ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा. ओके ओके सर. बाय सर. हैव अ विल नाइस स्टॉप डे. नाउ. ओके सर, बाय सर, थैंक यू. यस, थैंक यू वेरी मच. बाय. सर बाय सर, हैव अ गुड डे. यस, बाय, थैंक यू. थैंक यू.